the main topic. What is a coupon and then what is the difference between a coupon rate and an yield? As we mentioned earlier, the initial rate of interest which is predetermined or which is fixed at the time of issuing a bond with a periodicity which will be given to the investor is the coupon rate. So definition में आप लिख सकते हो periodic interest payment made by the borrower to the bond investor and is expressed as a percentage of the face value. Formula बहुत simple है, rate of interest is equal to your coupon payment यानी amount divided by the face value. So if it is a interest payment is 1 lakh rupee, face value of a bond is 10 lakh rupees, my coupon rate becomes 10%. Hypothetically, I'm not the first time investor or मैंने day one पे invest नहीं किया. I bought this bond in the secondary market and there is a fluctuation in the price of the bond. The price of the bond has changed from, say, now initially when it was 10 lakh rupees, now the price of the bond, the market price of the bond has moved to 9 lakh rupees. So ABC Limited, again face value 10 lakh tha, 10% coupon rate tha. Now the market price maybe 3 months down the line or 1 year down the line has shifted to 9 lakh rupees. The coupon payment still remains the same because issuer will still make the payment at the rate of 10%. But my investment for that bond was 9 lakh rupees and not 10 lakh rupees. So क्या होगा effectively? मेरे को yield यानी कि जो effective return or the absolute return in the hands of investor will be a little bit higher. It will come out as 11.11%. यानी formula वही है, आपको coupon payment 1 lakh rupees ही आ रहा है, but your market price or the market price at which you have invested is 9 lakh rupees. You will get a higher yield. So coupon and yield are two different factors. Coupon is the initial rate of investment return which has been promised by the issuer to the investor, which is determined by the face value of the bond. Yield is an effective return which an investor will get after investing a bond at a certain price. प्राइमरी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर ने, तो उसने प्राइमरी में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए में और मैच्योरिटी में भी मिला उसको 10 लाख रुपए ही. So for him the coupon and the yield still remains the same because for him the net realization is only 10%. Now this can go reverse as well, in a sense that you have invested right now, considering example 9 lakh rupees था, I may invest into the price of the bond has increased, means वो मेरे को 10 लाख की जगह 11 लाख रुपए में ये बॉन्ड मिल रहा है, which effectively means is कि मेरा रिटर्न कम हो जाएगा यानी yield कम हो जाएगी. So instead of 10% as a base return, शायद मुझे वो 9% का actual calculation आएगा. So I will show you the calculation also in the next slide कि how it affects the return on investment. So as an yield is an absolute return which an investor earns for holding the bond for the time. What happens is yield is always related to the maturity, यानी कि duration you are holding the bond. So the exact word or the absolute terminology on which the bonds are traded in the secondary market are known as yield to maturity or YTM in a normal phenomenon. So yield to maturity is the total return that investor receives in the bond. It is actually the discounted cash flows which the investors earn and at the time of investment. So मेरे को अगर ये 5 साल का बॉन्ड है और हर साल मुझे 1 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है फॉर माय इन्वेस्टमेंट and I have invested into it at a lower the market price or the lower the par value of the bond, my absolute YTM will be higher. And on the vice versa, if I have invested into higher price at the more than the par value of the bond, then my absolute return or the YTM will be lower than the coupon rate of the bond. I will show you with another example in the next slide, but hypothetically, this is what the basic definition of a yield to maturity. Bonds are traded into YTM basis. एक और इसमें factor बहुत important होता है YTC or yield to call. Some bonds have the call option in between. Call option यानी कि the issuer has the right to exercise the call before the maturity date. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक पंजाब नेशनल बैंक का एक बॉन्ड रखा हुआ है, बैंक बॉन्ड, जहां पे दो दी मेच्योरिटी डेट इज टिल 27 November 10, 2027, but the issuer has created a call option structure which was on 10th November 2022. The issuer has the right to exercise the call date 10th November 2022
which means अभी वो principal वापस कर देगा investor को, and there will be no servicing of interest going forward. In this scenario, instead of YTM, it is more important to calculate YTC, because we understand that there is a high possibility that issuer might exercise the call, and इसमें restriction as an investor cannot stop the issuer doing it. So for an investor, it makes sense to calculate the return on the basis of YTC and not YTM. So there are two factors when investors should look into the bond pricing while investing into it. YTM, yield to maturity, but if the bond has a call date, you should always look for YTC and not YTM while investing into bond. We have bond I, just like London I and Singapore I, we have a bond I which is over here. And it is a very good graphical presentation. Yes. So people have generally a confusion about the price and yield, how they are related to. So yield and price of a bond has an inverse relationship. Means if the yield goes up, the price comes down, or if the price goes up, the yield comes down. Very simple or basic understanding. Interest rate के मूवमेंट पे प्राइस नीचे गिरता है. अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, मतलब इफ आई हैव इन्वेस्टेड 100 रुपी बॉन्ड था, 100 रुपी एट पार वैल्यू पे 10% कूपन था. इफ आई इन्वेस्ट एट 90 रुपीज फॉर अ बॉन्ड and the maturity value is 100 rupees, it means that मैं लो प्राइस में इन्वेस्ट कर रहा हूं. whereas क्योंकि मैं प्राइस में लो इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड रियलाइजेशन स्टिल 100 रुपीज है, तो मेरे को नेट रिटर्न ज्यादा बन जाएगा, यानी कि मेरा इंटरेस्ट रेट यानी यील्ड ऊपर आ जाएगा. whereas वही बॉन्ड अगर 100 रुपी पार वैल्यू पे अगर मैंने 110 रुपीज पे इन्वेस्ट किया, मेच्योरिटी वैल्यू स्टिल रिमेन्स 100 रुपीज, तो मतलब आई पेड 10 रुपीज प्रीमियम टू एक्वायर दिस asset and I bought it at higher price, means my net return or the yield will be lower. So price and yield has an inverse relationship. One goes up, the other goes down. हम हमेशा बॉन्ड वैल्यू को पार वैल्यू पे बॉन्ड को प्राइस करने की कोशिश करते हैं, और पार वैल्यू ने 100 रुपीज. द बॉन्ड कैन हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, lakh rupee or 10 lakh rupee, but par value for 100 becomes very easy for calculation, and hypothetically the price of the bond is 100.50. मतलब अगर फेस वैल्यू ये बॉन्ड का अगर 1000 रुपीज होता तो प्राइस क्या हो जाता, 1005 रुपी बॉन्ड हो जाता है, यानी कि पार वैल्यू से ऊपर हो गया, यानी बॉन्ड प्रीमियम पे चल रहा है. ठीक है. इफ आई एम कंसिडरिंग कि ये बॉन्ड 1 लाख रुपए का होता तो मेरा करंट प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड हैव बीन 1,05,000 रुपीज, और अगर वही 10 लाख होता तो 10,05,000 रुपीज हो जाता. तो पार वैल्यू क्लीन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी पड़ता है. पार वैल्यू इज 100 रुपी फॉर अ बॉन्ड, करंट प्राइस इज 100.5, whereas the coupon is 10%, यानी कि दिस इज एन इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी 10% एनुअल और 10% कूपन रेट में देना है. लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट थी 11th Jan 2022, यानी कि इंटरेस्ट आईपी डेट. As an investor, I am buying this bond in the mid of a year, say 30th June 2022. So somebody who was holding the bond from 12th January to say 29th June 2022, he is the legitimate owner for the interest received for this period. However, the bond on the secondary settlement has been bought by another issuer. से कोई investor ने B ने buy कर लिया. A was the first owner of the bond, जिसने 6 महीना hold किया है bond को, और 6 महीने बाद उसने B investor को sell कर दिया. Issuer will only pay interest once in a year, यानी कि अब वो next January 11th 2023 में अपना interest at rate of 10% pay करेगा. Issuer doesn't know बॉन्ड को बीच में 3 बार ट्रेड कर लिया है, 4 बार किसने ट्रेड कर लिया या डीमैट में एक डीमैट से दूसरे डीमैट में मूव कर लिया. What he will say on the record date, whosoever is holding the bond is the rightful owner of the interest for the entire period. But when you are buying a bond, you are not buying, you are investing from the day you purchase the bond till the next interest payment date.
सो जो पहले का जिसने इंटरेस्ट रखा हुआ था, आपको उसका अक्रूड इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा. ही इज द लेजिटिमेट ओनर ऑफ दैट इंटरेस्ट इनकम. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, अगर ये 169 डेज है जितने दिन सामने वाले ने इन्वेस्ट इश्यू बॉन्ड अपने डीमैट में रखा था, तो उसका ये राइटफुल ओनरशिप है ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%. तो हम वो कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है, अगर वो एक बॉन्ड 100 रुपीज का है तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ. अगर 10% रेट के हिसाब से मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूँ ठीक है यार, मेरे को 5 रुपए मेरा ब्याज होना चाहिए था. उसने 169 है 365 डेज के साथ निकाला. तो व्हेन वी डू इट पर डे कैलकुलेशन and for the 169 days period, 10% rate of interest into 100 divided by into 169 by 365 days calculation किया year का, तो 4.63 is the interest component for 100 rupee. If the bond is 1000 rupee face value हो गया तो आपका हो जाएगा 463 rupees, 46.30 rupees. यही अगर आपका 1 लाख रुपए का हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4600 rupees. एंड कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड होगा तो 46,300 रुपीज मेरा अक्रूड इंटरेस्ट कंपोनेंट हो जाएगा, जो मुझे राइटफुल ओनर को पहले देना पड़ेगा व्हेन आई एम बाइंग अ बॉन्ड. सो आई एम बाइंग अ बॉन्ड एट अ क्लीन प्राइस ऑफ 100.5. डर्टी प्राइस क्या हुआ, व्हेन आई ऐड क्लीन प्राइस प्लस द अक्रूड इंटरेस्ट फॉर दैट ड्यूरेशन. सो टोटल प्राइस हो गया 105.13, जिसमें 0.5 is the premium I am paying to invest in this bond and 4.63 is the interest component. ये मैं आज पे कर रहा हूं, पर ये एक्चुअली मेरे को वापस आ जाएगा on the next interest payment cycle, यानी कि Jan 11 2023 में मेरे को पूरा इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, यानी कि 4.63 हुई एडिशन जो पेमेंट है जो मैं आज दे रहा हूं वो भी मेरे को पूरा आ जाएगा as an interest component, because issuer will pay for the entire 365 days of interest. So what should be my investment amount when I am making a payment? The face value considering is 10 lakh rupees, is total considering 10 lakh rupee, yani ki face value of the bond into dirty price of the bond, yani ki 105.13, ठीक है ना, by 100. So मेरा total investment value आज हो गया 10,51,300, यानी 10,51,300 rupees is my investment value, where my principal component is 10,05,000 only. 46,300 is the interest component I am paying, which I will be getting it in the next interest payment cycle. The only product in India which is currently available, and it is free of cost for all our signed up customers. Whoever has signed up on our website, this is free of cost for customers, which is called the bond calculator. तो जो एक्सेल फाइल आपने बताई बड़ी सिंपल सी थी आपकी, बट बॉन्ड में अनफॉर्चुनेटली इतना सिंप्लिसिटी नहीं होता है, बिकॉज हर एक बॉन्ड का मेच्योरिटी अलग होता है, रिडेम्पशन अलग होता है, काफी चीजें अलग होती रहती है. सो उसलिए हमने एकदम सिंपल मैकेनिज्म बनाया है जहां पे एक हमारे इन्वेस्टर को या हमारे साइंड अप कस्टमर को सिर्फ आके प्राइस या यील्ड एक बॉन्ड का कैप्चर करना है. अगर हमारे पास वो इन्वेंट्री है तो वो राइट साइड पे आप जैसे देख रहे हैं, आर ऑफर प्राइस विल बी गिवन और या उसका यील्ड भी दिया रहेगा. अगर वो इन्वेंट्री नहीं है तो फिर ये ब्लैंक आता है. सो इसी के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी गिविंग अ क्विक डेमो of how the bond calculator works. I'll just change my screen. So this is, you are currently on, I've got us everybody on IndiaBonds website currently. I hope everybody is able to see my screen. Yes, you can see. Yes. So before we begin, so on the right side, just below the chat owl, we have a bond calculator. This bond calculator is free of cost for everybody. So you can just click on this. In case if you are a new signed up customer, it will just ask you to accept the terms and conditions. There are no charges for it. The same thing can be selected from the bond calculator from the products tab as well, wherein bond calculator can be selected. मतलब जो अभी हरित ने एक्सेल पे कैलकुलेशन करके बताया, काफी बार बॉन्ड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको एकदम सिंपल करने के लिए हमने हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे साइंड अप यूजर्स के लिए, एंड बिकॉज एजुकेशन इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव, bonds is a new asset class that everybody is taking exposure. We are keeping this product free of cost for all our signed up customers. Lot of fund managers, lot of wealth guys are currently already using this. They have a separate back office who does all this calculation, but all that is readily available at the tip of your hands or tip of your mouse.
wherein you can calculate yields for all these bonds that is there currently live, as well as this you can also do for bonds which are not there live in our inventory. मतलब अगर कोई बॉन्ड हमारे इन्वेंट्री में नहीं है, फिर भी आप वो बॉन्ड का यील्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिग्रिड का एक पेपर है जो हमारे वेबसाइट पे है, which is AAA rated InvIT, right, which is backed by one of the biggest investors. So बहुत सिंपल है, आपको अगर नाम चाहिए तो आप नाम कॉपी करो, यहाँ पे इनका ISIN होता है। ISIN क्या होता है? यूनिक ISIN कोड होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आओ, आपने ऐसे पेस्ट कर दिया, ये आपको इंडिग्रिड का आइकन दिख जाएगा। इसको आपको एक्सपैंड करना है, समझो ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है। अगर आपको एक्सपैंड करना है और थोड़ा बड़ा दिखाना है तो इस तरीके से। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, कूपन इसका 732 है करंटली। अगर आप ये देखेंगे तो 98 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स 732 का कूपन इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज जो 100 रुपए का फेस वैल्यू था वो डिस्काउंट पे चल रहा है 98 रुपीज में। मतलब आपका जो यील्ड है वो हायर है। अगर आप देखेंगे 732 का कूपन 783 का रिटर्न दे रहा है। दैट मीन्स अगर आज आप इन्वेस्ट करेंगे इस बॉन्ड में तो आपको 732 का रिटर्न नहीं मिलेगा बल्कि 785 का रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम 98 रुपीज में बेच रहे हैं इसलिए आपका रिटर्न हायर है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 100 लिख दूं, एकदम सिंपल, तो ये अगर आप देखेंगे तो 751 का यील्ड आता है, बिकॉज ये एनुअलाइज्ड है, और जबकि ये 732 जो है ये क्वार्टरली कूपन है। तो क्वार्टरली कूपन को एनुअलाइज्ड यील्ड में कन्वर्ट किया तो इन दैट केस दिस बिकम्स 751। दैट मीन्स 732 का कूपन आपको एवरी क्वार्टर में इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, जिसका एब्सोल्यूट रिटर्न हो जाता है 751। वही सेम चीज हम, क्योंकि आपको 98.173 में दे रहे हैं, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा 98.17, एंड अगर आप देखेंगे तो 783 का यील्ड आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज द रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट। दैट मीन्स, एंड दिस keeps into consideration RBI holidays, your bank holidays, your Saturday Sundays. So if I want to, let's assume कि आज 20 तारीख को हमने कल के डे का सेटलमेंट लिया। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? If I want to purchase this bond and I am going to make the transfer of money to you to ICCL, which is the settlement organization by BSC. So in that case, you will be transferring the money in their account where the settlement happens, or in NSE's case, it is NCCL. So in that case, you will be selecting which day you want this settlement. Let's assume कि आप 21st select करते हो, 21st अलाउ नहीं करेगा, 20th अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि ये हॉलीडे का दिन है, तो इसलिए अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करूंगा तो इस तरीके का एरर आएगा। प्लीज सेलेक्ट डेट बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। लेट्स अज्यूम कि आपको स्पंदना स्फूर्ति देखना है। स्पंदना स्फूर्ति करंटली 1185 के यील्ड पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम कि अगर यही सेम चीज आपको 1175 पे देखनी है, जैसे अगर आज आप इन्वेस्ट करने आएंगे 15 स्फूर्ति में इंडिया बॉन्ड्स के थ्रू, तो यू विल बी बेसिकली गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 11.85। लेट्स अज्यूम कि ये कल को रेट चेंज हो गया, इसमें डिमांड बहुत आ गई और इसका यील्ड इंप्रूव हो गया, तो सॉरी रिड्यूस हो गया, तो देन दिस इज द प्राइस एट विच यू विल बी बाइंग, which is 100.1499, which is 100.075 से ऊपर आपको देना पड़ेगा। और यही चीज अगर समझ लीजिए कि 12% हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको 12% कर देता हूँ, तो इन दैट केस आप 99 रुपीज में खरीदेंगे। दैट मीन्स आपको 12% का रिटर्न आएगा और ये 99 रुपीज में आपने खरीदा। तो इस टाइप का सेम कैलकुलेशन रहेगा जो आप कर सकते हैं वेरियस बॉन्ड्स के लिए। यील्ड एक बॉन्ड का क्या चीज पर इम्पैक्ट करता है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि आरबीआई डिसाइड करेगा। अभी आज की तारीख में bonds are at the probably one of the highest rates that you are getting, much higher than FDs, much higher than some of the equity assets also who are able to give returns, right? Credit quality of issuers, this is the credit rating that we are referring to. Every bond has a credit rating. Then the liquidity of the bond, मतलब demand supply कितना है, इसके अंदर कितना सेकेंडरी में आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं वो, और उसके अलावा मेच्योरिटी विच इज द tenure of the bond, which is 1 year, 3 year, 5 year, and 7 years, or 10 years, or even beyond, right? So these are some of the factors that affect a bond. Every bond that is associated with or any asset class that is associated, all of them currently have a risk that is attached to it, and these are some of the risk, which is the liquidity risk, fraud risk, market risk, as well as credit risk. मतलब कोई भी financial investment is not without
any risks. So that means it's very important for you to read the offer document, read the rating rationale, read the information memorandum or the term sheets that are there, speak to a bond manager, speak to your wealth advisors, anybody, try and clarify as much as doubts you have. And please understand that no investment has zero risk. Every investment will have risk. However, it is very important to have an informed decision. And that is the reason why a bond detail page, and we are probably one of the only platforms who are giving which has a bond directory, which is also giving out IMs and term sheets for bonds which are not available on a platform as well. And we are doing that for free of cost for everybody.